Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss our last topic of chapter number 5, equilibrium. So in this topic, we'll discuss what is meant by equilibrium, conditions for equilibrium, and how many states of equilibrium are there. So what is equilibrium? Equilibrium, a body is said to be in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity. अगर एक ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर रेस्ट की स्टेट में है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. यानी दो कंडीशंस है, एक तो ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना या फिर ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना, एंड बोथ आर पॉसिबल if sum of all the forces acting on the body is equal to 0. अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 हो तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकता है. सो इन बोथ states object is said to be in equilibrium. Mathematically we can write the sum of forces is equal to 0. This symbol is used for sum and known as summation. So summation F is equal to 0. Sum of the forces is equal to 0. Now there are three states of equilibrium named stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. So these are three states of equilibrium. So first of all, stable equilibrium. A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. कि अगर एक ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किया जाए, उसको स्लाइटली टिल्ट किया जाए और फिर फोर्स के रिमूव होते ही अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी प्रीवियस पोजीशन रीगेन कर ले, देन इट इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पेपर कोन और इस पेपर कोन को इस तरह टेबल की सरफेस पे रखा गया है. इसका जो बेस है दैट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ टेबल. Now there are two forces. First is the weight of that paper cone, which is acting vertically downward, and second is the normal reaction force, which is acting vertically upward. Here G is the center of gravity of this paper cone. So when this paper cone is slightly tilt, आप नोट करेंगे in this second diagram, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं, इसकी एक्चुअल पोजीशन से डिस्टर्ब किया जा रहा है. So in this position you can notice that the line of action of normal reaction force वो change हो गया. पहले वो पॉइंट यहाँ मिड पे एक्ट कर रहा था, जबकि अब ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जहां पर पेपर कोन टेबल टॉप सरफेस के साथ कंटेक्ट में है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर की पोजीशन है. अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या इस पेपर कोन को यहाँ पर फोर्स हटाएंगे तो फोर्स के हटाने से ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाती. वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाना इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंसीडर करने में हेल्प करता है. So what are the characteristics if a body is said to be in stable equilibrium? So those characteristics are, number one, center of gravity rises and then falls back. कि जब आप इसको टिल्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी एक्चुअल पोजीशन से राइज हो जाएगा. The center of gravity rises and then falls back. Number two, the line of action of weight lies inside the base area of the cone. This is the base area of the cone. This one is the base area. So while tilting, this center of gravity, line of action of weight, it lies inside the base area. अभी भी ये base area के अंदर है. And third one, which is very important point, is since line of action of weight is lying inside the base area, so it helps to produce an anti-clockwise moment in this paper cone about this point of contact. This is the point of contact. So this line of action of weight can rotate because this perpendicular distance is also present, represented by x, which is called moment arc. So this line of action of weight will produce anti-clockwise moment and this paper cone will come back to its previous position.
So other examples of stable equilibrium are chair lying on the floor, the heavy base of the vehicle, and the table lying on the ground. So these are other examples of stable equilibrium. Second type, which is unstable equilibrium. This is second state of equilibrium called unstable. So if a body does not return to its previous position, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को स्लाइटली टिल्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन रीगेन नहीं कर पाता, so this is called unstable equilibrium. If it does not regain its original position is called unstable. जबकि स्टेबल में कहा था कि वो ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन रीगेन कर लेता है, जबकि यहाँ ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा. So this is called unstable equilibrium. For example, if the same paper cone is balanced at its tip, इसको अगर इसकी टिप पे बैलेंस किया हुआ है, so weight is acting downward, normal reaction force at the point of contact is acting vertically upward. अगर आप इसको यहाँ स्लाइटली टिल्ट करते हो, थोड़ी सी भी इसकी पोजीशन में आप चेंज लाते हो और फिर जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये पेपर कोन उसी टिप पर बैलेंस होने की बजाय नीचे गिर जाएगी. ठीक है, ये ड्रॉप हो जाएगी, टॉपल ओवर होगी. और इस टॉपलिंग की वजह क्या है? टॉपलिंग की रीजन क्या है कि नाउ इट्स अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, they change their position, and now line of action of weight does not passing through the base area. ये base area से pass नहीं हो रही, because base area in this position is very small, just the tip of that paper cone. So this line of action of weight will move away from the base area and object will not remain in state of equilibrium. So these are the characteristics for unstable equilibrium. Number one, center of gravity falls from the actual position and continues to fall. कि ये center of gravity की position है, and then while tilting, its center of gravity falls from the actual position and continues to fall. Number two, line of action of weight lies outside the base area. अब जहां से वो वेट पास हो रहा है वो बेस एरिया से बाहर लाइन है, तो इसलिए भी ये ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रहेगा. एंड थर्ड वन, हियर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द वेट. एक्चुअली देयर इज क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द वेट, यहाँ क्लॉकवाइज में मूवमेंट होगा. सो दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ वेट अबाउट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट causes the toppling effect. कि ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, दिस causes the toppling effect. ये उस पेपर कोन को नीचे गिरने में सपोर्ट करेगा. And the third is neutral equilibrium. This is third type, which is called neutral equilibrium. So in neutral equilibrium, if a body remains in its new position when disturbed from its previous position, कि previous position से इसको disturb किया और ये एक नई position gain कर लेता है, then it is called neutral equilibrium. अगर इसी पेपर कोन को आपने यूं इस तरह प्लेस किया हुआ है और इसको रोटेट करते हुए आप इसको इस पोजीशन में लेकर आते हैं, तो आप नोट करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ना राइज होगा ना ही फॉल करेगा और वो ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही रहेगा. एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाइदर rises or falls, it remains at the same level. Number two, the line of action of the two forces, weight and normal reaction force, always coincide. ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी, weight और normal reaction force. And number three, no moment of force will produce and no moment provided by the weight about the point of contact to turn the paper cone. So this is neutral equilibrium. So these are three states of equilibrium: stable, unstable and neutral. स्टेबल में आपने नोट किया कि अगर आप उसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन रीगेन कर लेता है.
जबकि अनस्टेबल में वो अपनी एक्चुअल पोजीशन रीगेन नहीं करता, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में वो ऑब्जेक्ट एक न्यू पोजीशन गेन कर लेगा। इसके बाद जो फर्दर डिफरेंसेस हैं उसमें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम राइजेस फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, but in unstable equilibrium it falls, and in case of neutral equilibrium there will be no change in the position of the center of gravity of that object. It will remain at the same level. In stable equilibrium, line of action of weight lies inside the base area, but in case of unstable it lies outside the base area. And in case of neutral equilibrium, weight and normal reaction force, they act along the same line. And finally, stability. And how can we improve the stability of an object? So stability of an object can be improved by lowering the center of gravity as low as possible. एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा, जितना कम हाइट पे होगा, वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. एंड नंबर 2, इंक्रीजिंग द बेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर आप ऑब्जेक्ट का बेस एरिया बढ़ा देते हो तब भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. सो दीज आर 2 फैक्टर्स व्हिच can help to increase or improve the stability of an object. कि center of gravity को मुमकिन बनाया जाए कि it is as low as possible. And second is increasing the base area of object. For example, in this case, this is the car, and this one is the line of action of weight of the car. तो अगर ये कार टिल्ट होती है तो इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट स्टिल पासिंग थ्रू द बेस एरिया. It is still passing through the base area, and this will help to make the cars to improve the stability of the car, because the line of action of weight is passing through the base area. इस सेकंड में जो है आप नोट कर सकते हैं कि there are 2 different cars and they have different base area. इनकी डिफरेंट बेस एरिया की सूरत में आप बता सकते हैं कि दिस वन इज मोर स्टेबल. This big car is more stable because its center of gravity lies very near to the road surface, as well as it has large base area. इसका बेस एरिया भी ग्रेटर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लाई कर रहा है, तो इसलिए ये जो कार है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन. So these are 2 points which can help to improve the stability of an object. Number 1, by lowering the center of gravity of an object, and number 2, by increasing the base area of an object. Thank you.